Students, now let us start with chapter number 6, that is physical and chemical changes. In previous chapters we have discussed about acids, bases and the salts. Clear? I hope that chapter is clear to you because this is coming in your exam. Your periodic exam, this chapter will be included. Okay? Now let us start with a new chapter, that is physical and chemical changes. Now the changes. This changes word you might have heard. Whatever the things which are around us, they are not the same. We call them as a changes. Say for example, weather changes. In the morning it was a sunny day. सुबह के समय धूप थी. In the afternoon it's raining. दोपहर के समय बारिश हो रही है. These are all the changes. Now whatever the changes around us, we see these are of two types. There is physical change and a chemical change. Now what do you mean by physical change? What do you mean by chemical change? We are going to discuss in this chapter. Clear? पहले हम बात करेंगे physical changes के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे chemical changes के बारे में. Let us see about the physical changes. Physical change which alters the forms of substance but does not change it to another substance means the change in which no new substance is formed. ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वी कॉल इट एज अ फिजिकल चेंज. क्लियर? बस ये चेंज में क्या होता है, इस चेंज में जो है ओनली द शेप ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, आइदर द साइज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कटिंग ऑफ पेपर, यू टेक अ पेपर एंड यू कट इट. आप एक पेपर लीजिए और उसको कट कर दीजिए. क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? नो. Just the size and the shape of a substance is changing, of the paper is changing. Clear? No new substance is formed. We call it as a physical change. It dissolves. You take water and add sugar into it and stir it. Sugar will disappear. We call it as a dissolving or the solubility. Clear? This is also a physical change. The changes in the phase like freezing, boiling, evaporation, condensation, these are all the physical changes. Clear? Now I will tell you the examples, it will be clear with you. In physical changes, when the physical change occur, the matter changes its physical properties but no chemical nature is changed. Its chemical nature is not changed. Only the physical properties are changed. अभी physical properties क्या होती है? Physical properties may be the state of matter, texture means either it is solid, liquid or gas. ये change हो सकता है, shape change हो सकता है, size change हो सकता है, color change हो सकता है, odor change हो सकता है, volume change हो सकता है, mass change हो सकता है, weight, density, all these things are change. We call it as a physical change. ये सारी properties क्या हुई? Physical properties. Clear? Say for example you take a egg and boil it. उसको boil कर दीजिए. The egg will be changed? No. The egg will be same. Clear? Only the size of the egg will increase. This we call it as a physical change. एक टैबलेट लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए. उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी क्या? उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? नो. द प्रॉपर्टीज विल बी सेम. वी कॉल इट एज अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ पेपर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. कटिंग करने से, कट करने से पेपर क्या होगा? पेपर की प्रॉपर्टीज चेंज होगी क्या? नहीं. ओनली द साइज, शेप ऑफ द पेपर विल चेंज. द मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर हम अपने घर में ही देखते हैं, आप आइस को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं? यू टेक सम वाटर इन द आइस ट्रे एंड यू कीप इट इन द फ्रीजर. फ्रीजर में रखते हैं मतलब क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर कम करते हैं आप. जैसे उसका टेम्परेचर कम किया, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? आइस. दिस फ्रीजिंग और दिस इज द फिजिकल चेंज. यू टेक द आइस एंड कीप इट असाइड. आइस को निकालिए फ्रीजर से और उसको बाहर में रख दीजिए कुछ समय के लिए. वाटर में कन्वर्ट होगा फिर से वो. मीन्स दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द रिवर्सिबल. आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल the physical properties or the physical changes. One more thing, sewing of wood. Wood को अगर हम cutting करते हैं, it is also a physical change. Disappearing of puddle or
जो पानी के जो जमे हुए गड्ढे होते हैं रोड पे, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में, दिस आर डिसअपियर्ड. 2 दिन पहले वहाँ पर बारिश का पानी जमा हुआ था एंड आफ्टर 2 days इफ यू ऑब्जर्व और आफ्टर फ्यू डेज यू ऑब्जर्व, दिस आर डिसअपियर्ड. अब वो डिसअपियर हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वो जो वहाँ का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है एंड इट विल बी disappeared. Clear? So this is also a physical change. Now these are all about the physical changes. Now apart from these, so many examples you can give of the physical change. Clear? Along with your responses, whether you have seen the video or not, you will tell me any 2 physical changes around you. जो भी मैंने examples बताए हैं उसके अलावा कोई भी 2 physical changes के example और अपना नाम, इसके साथ में मुझे आज attendance देंगे. Clear?